Hello dear students. Now today we have started new chapter class 11th history, and now today we also start the term second syllabus. Today we have discussed chapter number 9, the industrial revolutions. So first of all we have start the meaning of industrial revolution. कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस कहते किसे बेटा, इसका मीनिंग क्या होता है और स्पेशली ये कौन सी कंट्री में स्टार्ट हुआ. So, a major change in the industries by which goods produced in the houses by hand were replaced by those in the factories with the help of machines. बेटा जो काम पहले हाथ से हो रहा था, जो गुड्स प्रिपेयर किए जा रहे थे, जो बनाई जा रही थी वस्तुएं, वो अब बेटा हाथ की जगह मशीनरीज में बनने लग गई, फैक्ट्रीज में बनने लग गई और मशीन्स के द्वारा बनने लग गई. ये जो ड्यूरेशन था टाइम पीरियड का इंग्लैंड के अंदर स्पेशली, ठीक है, 17 एंड 18 सेंचुरी वी कॉल इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस. सोर्स सो वर्क्स ऑफ अर्नॉल्ड टॉयनबी. देखो अर्नॉल्ड टॉयनबी बेटा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने अपने लेक्चर्स दिए थे और उन्हीं लेक्चर्स को बाद में बेटा एज ए बुक के रूप में पब्लिश किया गया था. सो जो उनके लेक्चर्स थे, लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड, पॉपुलर एड्रेस नोट्स एंड अदर फ्रिकमेंट, इस नेम से बेटा उनके जितने भी लेक्चर्स थे उनको पब्लिश किया गया. और ये एक बहुत ही बेस्ट टाइप ऑफ द सोर्स है. दे प्रोवाइड टू इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्पेशली दैट टाइम इट्स स्टार्ट इन इंग्लैंड. सेकेंड है वर्क ऑफ हिस्टोरियन लाइक T.S. एस्टन, पॉल मोनेट्स एंड एरिक हॉब्सवर्न. इनके भी बेटा जो वर्क है ऑन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, देयर आर आल्सो द सपोर्ट ऑफ हेल्प. नाउ फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, the transformation that occurred in the industrial and economic sectors, especially जो बेटा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो बदलाव हुआ वहाँ पे, जो चेंज हुए especially in the industrial and economic sectors in the Britain during the 1780s and 1850s is called the first revolution. ठीक है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहते हैं इसको बेटा. और जो टाइम पीरियड होगा 1780s to 1850. The initially focus of the first industrial revolution was on textile. तो सबसे पहले ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बेटा जिस फील्ड में हुआ, there will be textile. The sequences of the revolution changed the permanently the human labor, consumptions, family structures and the social structure also. Now the term of industrial revolutions, so George Michelet in the France and Frederick Engels in Germany. There is the two person, the name of George Michelet, ये बेटा फ्रांस से थे, and Frederick Engels, it's come from Germany, were the scholars who used the term industrial revolution for the first time. तो इन दोनों पर्सन ने बेटा पहली बार इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो वर्ड है ये दिया बेटा. In English, Arnold Toynbee, economics used the first time in English when he was giving lectures at Oxford universities. ठीक है, जब उन्होंने अपने लेक्चर्स दिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ में, they called this type of change as industrial revolutions. Now some factors that lead to the industrial revolution, especially in the start in the Britain. So the first, ब्रिटेन वॉज द फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन नेशन. तो बेटा जहाँ पे सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इन द वर्ल्ड, देयर इज ब्रिटेन इज द फर्स्ट कंट्री बिकॉज of its political stability from the 17th century onward and the unification of Wales and Scotland with England under the monarchy system. तो देखिए बेटा उस समय एक तो ब्रिटेन ने बहुत सारे नेशंस को अपना कॉलोनी बना रखा था. ठीक है, सो डैट मीन्स इनका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत अच्छा था. और सेकंड, वेल्स और स्कॉटलैंड जो वहीं के कंट्रीज थे बेटा, अदर कंट्रीज, वो भी इसके अंडर में आकर, और एक इंग्लैंड कंबाइनली वी सेज यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के ये पार्ट बन गए थे तीनों बेटा. सेकेंड पॉइंट, द स्टेबिलिटी ऑफ पेव्ड द वे for the common law, a single monetary system and the currency with the single market. All this enable authorities to impose the proper tax on the goods and that pass through these unified regions also. And by the end of the 17th century, the prices of goods increase and the money become the medium of exchange. And the fourth point is people got the choice of spending money as well as expansions of their market for the sale of goods. And point number 5, England witnessed the major economic change known as agricultural revolutions in the 18th century. And 6th point, this was the process of enclosure in which bigger landlords brought up the small farms near their properties and enclosed the village common lands. And the 7th point is largest estates were created and resulted in the increasing in the food's production
Landless farmers and those who lived in the grazing animals on the common lands were forced to search for jobs somewhere else. So most of them shifted to nearby the towns also. कॉसेज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पॉइंट टू बी एक्सप्लेन. देखिए यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है बेटा. देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अनफाइंड अंडर द मोनार्की, कॉमन लॉ, सिंगल करेंसी, टैक्सेस ऑन द गुड्स, वेजेस और द जॉब समवेयर एल्स, मोस्ट ऑफ देम द सैलरीज. बैंक ऑफ इंग्लैंड फाउंडेड इन 1964. बेटा देखो सबसे पहले जब फैक्ट्रीज वहाँ पे सेटअप हुआ, इंडस्ट्रीज वहाँ पे बनी, तो पैसों के लिए बेटा, बिकॉज बैंक द प्रोवाइड आल्सो द लोन फैसिलिटीज टू द इंडस्ट्रियल्स मैन या बिजनेसमैन आल्सो. तो सबसे पहला जो बैंक बना वर्ल्ड में बेटा बैंक ऑफ इंग्लैंड, और ये बना 1964 में. एंड इंडिया हैज़ अ कॉलोनी, इन्वेंशंस ऑफ द स्टीम इंजन आल्सो, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशंस, मार्केट, इन्वेंशंस ऑफ द मशीन्स, इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवेज एंड द कैनल्स, एबडेंस ऑफ द कॉल्स एंड द आयरन, इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल्स. 17. Use of money as the medium of exchange, labor supply and global significance of London. Now some important point regarding to the London, emerge of the London. देखिए emergence of London. So the 18th century England witnessed the growth of the many towns and the populations also. Out of देखिए इंग्लैंड में बेटा बहुत सारे टाउन्स बनने लगे थे, पॉपुलेशन वहाँ की इंक्रीज़ हो गई थी, बिकॉज लोगों को द सर्च फॉर जॉब, वहाँ पे जॉब मिलने लगे थे. आउट ऑफ द 19 यूरोपियन सिटीज़ दोज द पॉपुलेशन डबल बिटवीन द 1715 to 1800. 11 cities were in only the Britain. London was the largest city in the England and was the hub of market as well as, and London was the significant city for the global trade also. By the 18th century, global trade shifted from the Mediterranean ports of Italy and France to the Atlantic ports of Holland and the Britain also. So London became the place of international trade by the replacing Amsterdam. पहले बेटा एमस्टर्डम में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही थी, बट नाउ द इंटरनेशनल ट्रेड द सेंटर ऑफ लंदन. एंड लंदन आल्सो बिकम द सेंटर ऑफ ट्रायंगुलर ट्रेड बिटवीन द इंग्लैंड, अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज. So this type of system we have known कि how can the industrial revolution start, and especially start in the Britain. There are so many reasons behind of this, because Britain, there is the politically condition is very stable, and also the manpower, labor power also the provide in the cheap rate of labor. So in this video we have discussed the meaning of industrial relations and also what kind of the type that have emerged especially in England. So thank you for this video. Thank you.